بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں شہلا قاضی اور آپ کے لیے پروگرام لے کر آئی ہوں شادی بیاہ پروگرام, جس میں کہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم آپ کو اچھے اور موزوں رشتے بتائیں. پروگرام کا فارمیٹ میں آپ کو بتا دوں. پروگرام کا فارمیٹ بتانے سے پہلے جو ہے میں آپ کو جو ہے رمضان المبارک کی جو ہے مبارکباد دینا چاہتی ہوں, کیونکہ رمضان کا مہینہ شروع ہو گیا ہے اور ماشاءاللہ 8 روزے جو ہیں وہ ہم نے کمپلیٹ کر لیے ہیں. تو فکر نہیں کریں, ابھی اور بھی روزے ہیں. تو یہ کہ لیکن یہ کہ بابرکت مہینہ ہے, زیادہ سے زیادہ دعائیں کریں, زیادہ سے زیادہ مغفرت کی دعائیں کریں اور زیادہ سے زیادہ اس کے اندر جو ہے جتنی بھی برکتیں آپ جو ہیں رمضان کے مہینے میں لے سکتے ہیں لیں, اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگیں. چلیں جی, پروگرام کا فارمیٹ میں پھر آپ کو بتا دوں. پروگرام کا فارمیٹ کچھ اس طریقے سے ہے کہ میرے ساتھ جیسے کہ پچھلے 2-3 ویک سے ہمارے پروگرام کا فارمیٹ تھوڑا سا چینج ہوا ہے, اور ہمارے پروگرام میں ہم نے جو ہے اپنے پروگرام میں یہ کہا ہے کہ اگر کوئی اپنے بزنس کو جو ہے شادی بیاہ سے ریلیٹڈ اگر کوئی بزنس ہے اس کو اگر کوئی پروموٹ کرنا چاہتا ہے تو ہمارے پروگرام میں جو ہے آ کے جو ہے وہ اپنے بزنس کو جو ہے پروموٹ کر سکتا ہے. اگر آپ میک اپ آرٹسٹ ہیں اور ڈریس ڈیزائنر ہیں, یا بہت اچھے مہندی جو لگاتے ہیں نا آرٹسٹ ہوتے ہیں وہ ہیں, یا کوئی بھی آپ کا شادی بیاہ سے ریلیٹڈ کسی قسم کا بھی بزنس ہے, تو آپ جو ہے ہمارے پروگرام میں آ سکتے ہیں اور ایز اے گیسٹ جو ہے آپ آ سکتے ہیں, اور پھر یہ کہ اپنے بزنس کے بارے میں آپ ہمیں بتا سکتے ہیں. تو پروگرام کا فارمیٹ جو ہے یہ تھوڑا سا چینج ہوا ہے. اور رشتوں کے حوالے سے میں آپ کو بتا دوں, کیونکہ ایوری ویک جو رشتے آتے ہیں پھر یہ کہ میں وہ رشتے جو ہیں آپ کو پروگرام میں بتاتی ہوں. تو جس قسم کے کسی بھی رشتے میں اگر آپ انٹرسٹڈ ہوں تو آپ ہمیں جو ہے کنٹرول روم میں آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں, یا پھر یہ ہے کہ آپ ہمیں جو ہے ای میل کر سکتے ہیں. ای میل جو ہے میں آپ کو اپنا بتا دوں, ای میل ہے ہمارا sb_dm@live.com. تو یہ ای میل ہے, اس پہ جو ہے آپ ہمیں ای میل کر سکتے ہیں رشتوں کے حوالے سے. چلیں جی, میں بتا دوں اپنے گیسٹ کے بارے میں. ہمارے جو آج گیسٹ ہیں وہ جو ہیں بہت اچھے میک اپ آرٹسٹ ہیں, اور جتنی بھی خیر ان کی تعریف کی جائے ان کے میک اپ کی, سیلیبریٹیز جتنے بھی ہیں سب کے انہوں نے جو ہے میک اپ کیے ہوئے ہیں, بہت اچھے میک اپ آرٹسٹ ہیں. اور کیا ہیں دیکھنے دیں مجھے, یہ جو ہیں بہت اچھے مینس ڈریس ڈیزائنر بھی ہیں, اور مینس کلیکشن جو ہے ان کے ایک علیحدہ کلیکشن ہے جو مینس کا ہے. بہت اچھے میک اوور جو مینس کے میک اوور جو ہیں وہ ہیں. اور دوسری بات یہ کہ بہت ہی مطلب یہ کہ سکسیسفل جسے کہتے ہیں, اپنی چیریٹی بھی ایک یہ رن کر رہے ہیں اور چیریٹی ورکر ہیں یہ. تو یہ ہے کہ اور کیا کیا ٹیلنٹ ہیں ان کے اندر, تو میں خود ان سے پوچھ لیتی ہوں. تو ہم جو ہے اپنے گیسٹ کو جو ہے ویلکم کرتے ہیں. عمران, السلام علیکم. وعلیکم السلام. First I'd like to say Mubarak to everyone, Ramzan Mubarak to all brothers and sisters, and secondly I'd like to say thank you Sheila for having me on, and Dr. Malik. That's good, yeah. So Imran, tell me about yourself, because you know you said yesterday you said you are a makeup artist and you are a dressmaker. Is that is it only for men's makeover or men's dressmaker? It's IK Collections and makeovers, Right. and I only do it for men's collection, Right. and for celebrities, to be honest. Oh, good. I've done 23 celebrities. That's a lot in the last year, and actually tomorrow is going to be a year that we're running. So that's very good. Quite, so is it only for UK or? It's all over. It's Pakistan. We get orders. We get them from India, everywhere. So it's national, international. So basically, it's when you say makeup, it's very light. When you know the male groom getting married, and we just put under eye makeup, just to show them a bit healthy. Exactly, yeah. Because lots of people, they call me, every time they say کہ شیلا آپ جو ہیں میک اپ آرٹسٹ گرلس کے جو ہے برائڈل کے جو ہے میک اپ کے آپ بہت بتاتی ہیں, وائی ناٹ گروم کا. تو آج جو ہے میں نے I'm getting quite a lot of bookings. I do groom, and the groom one is people think, the guys actually think that it's really light, to not put makeup on. It's not makeup, it's a concealer, and it's just under eye
Is it like same, like, the bridal makeup? I know the bridal is very, very high, Yeah. This is just very, very light. Very, very light, because you're spending like over £20,000 on a wedding, just say. Oh, a lot of these days, they do spend quite a lot of money. Right. And they're buying like between £300 to £1,000 suits. And then you look at the face, it looks like it's been, exactly, it's not fresh so enough. It's not fresh, and what we do is we just do the hairstyling and under eye concealer. What do you mean under eye? Basically, is it just under eye, the actual groom is tired, and what we do is just put something there that will makes them look fresh. Fresh, makes them look healthy, look better for the photos. I mean, everyone says photography can make you look better and everything, but when you're actually live talking to someone, they've seen you come in, your mates are coming, your family are talking to you, exactly, and it makes you look a bit fresh. Yeah. What about the facial? You do the facial as well? Yeah, do facial. Facials is 1 week before your actual 1 week before? Yeah, I advise 1 week, right, just in case you might come up with a rash or the skin, that's all the dirt's come out of it. And it just maybe reaction spots come out of it, but it just 1 week before, that's why I advise. 1 week before. So is it a whole package, Imran? It's a whole package. Yes, it's a whole package that we do. That's the actual wedding side for the groom. Then the other stuff that I do is the actual IK collections and makeups. I'm a designer. What is IK collection? It's Imran Khan. That's because of your name, Imran Khan. Imran is very well known name, and then Khan is, Imran Khan is very popular name. So many, Imran Khan, that's, very popular person. So basically, I've designed, blazers, we've designed sherwanis. Sherwanis as well. So we do quite a lot. So I've really is for celebrities, and most of them are like your Asian ones. Celebrities that so is it only for men, or I am looking or are into, you thinking in future, I'm going to be in the future, it will be children and women, because I'm getting quite a lot of interest of women. So that's good. You need to concentrate on one thing and then build it up slowly, and then work your way forward. Yeah, and I can see your blazer, it's really nice, जब आप पहली दफा आए हैं स्टूडियो में, तो मैंने सबसे पहले कहा है कि इमरान का जो blazer है, I really like it. So is that your own design? This is my own design. This is a Bollywood style blazer, and basically it's got these double buttons on. All right. And the collars that are like high up. So this is my own is that the fashion? Because I don't know about the men's fashion, is it into it is in fashion. It's quite well known in so is it double button one? Well, that's the fashion at the moment, and you put your own touches to it as well. So I mean, the stars like your Shah Rukh Khan wears stuff like this. Oh, Shah Rukh Khan. So did you copy the Shah Rukh Khan? No, he wears stuff like this on, very similar. Oh, that's very good. So he lifted up the the collars, so I decided to put two more buttons because it makes it stand out a bit. So right, that's very good. And the other thing जो मैंने note करी है, आपके जो blazer पे हैं, वो दो मैंने badges देखे. I can see, one of the flag of Pakistan flag, and the other one I can't see. What is that? Could you explain? That was from the Lord Mayor. I was from the deputy leader Imran Hussain from Bradford Imran Council. Hussain, is he? He's a deputy leader. He's done a lot for the charity, and they give us that on when it was the Lord Mayor's due for the stuff that I've done, the local community work, charity work that we've done. And the other one was from Raja Parvez Ashraf, the ex-MP of Pakistan, and he gives that because of the charity work. Because of your charity. So tell me about a little bit, because you are running your charity as well, and you are quite famous in Bradford. Well, I wouldn't say that. So what type of charity are you doing? Or basically, Khan People's Charity. I was a founder of it back in 2006 when it was the Pakistan earthquake. John Mackey, a good friend of mine, he's a famous Queen's painter. He does all portraits and everything. He's well-known celebrity painter. And we sat down and we was thinking, what can we name it? So he says, Khan, that sounds right. Right. So Khan. So we sat down. We you mean Khan? Yes. Is it
C-A-N. Yes, CAN. Oh, So KHAN, K. CAN. All right. So like can, like we can. Okay, Khan Khan. Yeah. That's it. Oh, that's And good. Yeah. from there we did the earthquake, then we did the In earthquake in Pakistan. in Pakistan, yes. Right. Okay. And then from the earthquake, we did the Pakistan floods that happened when it was really, really bad. We fed up to Nashora village. We fed up to 650 families. yeah, Now, most I heard. charities, obviously, you go out there and they feed them for a week or so, which is really good. But we give them rations Oh, good. that will last them for 15 days. So, which was a big thing that for us. Right. So, are you working your own, or have you got your We own all team, volunteers. or all volunteer? Volunteers. We have right. quite a few volunteers, and we all work as a team, and they all obviously get recognised for the work that they do. So yeah, that's our team. But So did you go to Pakistan and then? Yes, Yeah. I went Pakistan a couple of times actually to have a look what's going on and everything, because we rebuilt a school in Pakistan in Gujar Khan Sandal. And is Gujar that a Khan place Sandal. in Gujar Khan? Yes, Sandal, Yeah. Sandal. Sandal. That's called place Sandal. Yes, Sandal. So that's is. Could you tell me about? Well, about basically, it? it's a school, Yeah. And originally our Baba made it for us, for the kids and So, yeah, everything. right. It wasn't the government run. It's not government. It's not government funding. owned. It's Yeah. just, So it's I think obviously the teachers are from the government, because we can't supply teachers there because of Right. political reasons. And the school is actually building everything, was the community that put everything together. okay. Now, obviously, my cousin Shira from Oldham, and all my cousin Ralika, we made an extra class in the school. Right. And what today I want to talk about is to get the either whoever's in charge and go have a look if they're teaching the kids right. And also, there's 2 more classes that. Right. So you need 2 more classes. If they can to give us a build. grant, Yeah. and we've done the other one, all my cousins from Oldham. Right. And Shia from Oldham, basically, he's. Is it only for Shia community? No, it's all. It's for it's you know all for community, yeah. Right. Yeah, it's okay. all yeah. community, and basically, my cousins from Oldham have helped out with the actual school, built a new class. About 2-3 years ago, we actually fund for the tables and chairs, because when I went there, they was actually sat on the floor, and it was really, really cold. Right. And I thought that's really, really bad, especially in the winter. So we decided to obviously paint it all and get them that's chairs nice, and tables. And just recently, Shira, my cousin from Oh, I thought you are talking about. Yeah, his name's Shia. Yeah, all right, that's it. And he's from Oldham. I thought bless him, yeah. he's an amazing person. All right, and so his all name my, is Shia. And all my right. cousin. Okay, sorry about that. Really, No, it's it's a little bit misunderstanding. Yeah. All of them, Ralika made the extra class. Right. And what we're asking now is to government to give us the fund or a grant or something to make the other 2 classes, because them classes have been there for years and years. So that's what we're looking to do. And basically, not only just that, my main issue is when I go there and I'm trying to make appointments to see the government and everything, they're too busy or something like that. Yeah, and the because about they must be busy, Pakistan, obviously, which is fine. Yeah. But I would like them to actually go down and have a look, because the roads are really, really bad in the actual Gujar Khan Sandal. And basically, there's electric wires that are coming, they're like torn apart. If just imagine a kid goes next to the wires, they can actually get electrocuted. Right. And I mean, the lighting and everything, that's just same as the rest of them. Just them are the main issues that I want to bring up, because they said they did the roads 4 or 5 years ago, cement bike, pani bike, put plenty of water in, and the roads have gone back to normal. So someone needs to come down and have a look and assess it, because you can't even drive a car on there. My friends go, and I've been to all over Pakistan, and Gujar Khan Sandal, actually roads are bad. So basically, so you are coming. You are from Gujar Khan. Gujar Khan Sandal, yes. yeah, no? Okay. Sandal, yeah. Yes. Okay. And how many kids? Well, when I started, when I went, there was about 4 kids,
And Four mashallah, kids. yeah, Okay. and now every year there's about 20. And it was a girls' school. They've actually got boys in it as well, so which is better. So girls and boys can understand each other. Okay. So yeah, which is mashallah very, very good. Oh, And very good. we just want obviously the government to come down, have a look at the roads, and also someone to, I don't know which, whoever's in charge, and come down and have a look, assess the teachers, if they're teaching them right, give them the right skills, because we don't know. We go there once a year and have a look, and you know, they're saying yeah, so we just like to have that done and peace of mind. Yeah, I think this is very good. You know, this is very good work. Well, it's Imran, everyone yeah. that does. Yeah. You get quite a lot. You know, loads of people help out with the fundraising. I mean, when it was the earthquake and the floods, billions and billions of pounds went to Pakistan. You know, Right. and you know, it's gone out to different places. But when I look in our own village, Gujarahan, there's not much. It's not updated as the rest of the roads, from the GT road to you know, the shared Gujarahan shared from our village, Sandal. So Sandal road all the way through. So yeah. Okay. Yeah. तो नाजरीन, इमरान जो हैं अपनी चैरिटी के बारे में बता रहे थे कि गुजर खान में जो है इनकी चैरिटी जो ये स्कूल जो है वो रन कर रहे हैं, और किस तरीके से जो है पोर कंडीशन है वहाँ पे, जो रूट्स हैं वहाँ पे। तो ये है कि काफ़ी अरसे से जो है चैरिटी वर्क कर रहे हैं ये, और ये कि जो स्कूल जो ये रन कर रहे हैं बच्चों का, तो वो अपने ही वॉलंटरी वर्क के तौर पे ही जो है वो स्कूल को वो रन करें। गवर्नमेंट की कोई इनकी सपोर्ट नहीं है किसी किस्म की। चलें जी, कॉल ले लेते हैं। हेलो 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 जी, हेलो, कौन बात कर रहे हैं? जी, मैं चौधरी अल्ताफ बात कर रहा हूँ ब्रैडफोर्ड से। जी बोलिए। आपके शो पे इमरान खान चैरिटी से आए हुए हैं। मैं इनको सच्ची वेलकम करता हूँ, और मैं समझता हूँ कि जो काम इन्होंने किया है अपने चैरिटी के हवाले से वो रिमार्केबल है। बहुत अच्छा काम किया। आई हैव नोन इमरान फॉर क्वाइट लॉन्ग टाइम। ही इज अ ग्रेट पर्सन माशाल्लाह, जो दुखी इंसानियत के लिए ये काम कर रहे हैं, प्लस पर्टिकुलरली गुजर खान के लिए ये जो काम कर रहे हैं स्कूल के सिलसिले में, और वैसे भी इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। और मैं समझता हूँ कि ब्रैडफोर्ड से इनका तल्लक है, और ब्रैडफोर्ड के लिए ये फख्र है कि एक नौजवान होकर जिस तरीके से ये अपनी काविशें कर रहे हैं और मेहनत और लगन के साथ काम कर रहे हैं, मैं इनको रियली बहुत ही मतलब है कि कंग्रेचुलेट करता हूँ इनके हार्ड वर्क पे, और पर्टिकुलरली जो पिछले 10-15 साल से एज बीइंग ए यंग पर्सन ही इज बीन सपोर्टिंग लॉट ऑफ these community events और charitable events, और उसके लिए ये वाकया डिजर्व करते हैं कि इनको क्रेडिट जाना चाहिए। बहुत शुक्रिया अल्ताफ साहब, बहुत शुक्रिया आपका। और कुछ कहना चाहेंगे आप? थैंक्स। ओके, बहुत शुक्रिया। Thank you very much. He's a very good friend. जी। Basically, while we're talking about local projects that we're doing, is the local projects that we do is dyslexia awareness. Oh, that's good. Yeah. And we go to the Heaton Grange care home. That is basically old people's home, Goriana old people's home, and we give them presents and spend time with them, and basically make them drinks and everything. And the depression of them, it just eats off if you think about it, and they remember you for a week. I mean, we look after our old people and everything like that, but yeah, because I saw and you told me about yes, your so other sad charity when they about tell you when they tell you stories about the family. But what we do is we go down and give them presents and put a smile on their face. Is it nursing homes? Are you talking about? It's a care home. It's a care home, yes. Yeah. And then the other project that we do is the Bradford Hospital. When it's Eid, Diwali, Ramzan, Christmas, any celebrations or anything, to do with celebration, and we basically go down and 3 awards, Ward 21 and Ward 17, Good. we give presents out, because them kids cannot go home for a week or two, and they have to spend their Christmas or Eid or Diwali, whatever they celebrate, in hospital with their parents. So we go and give them presents and put a smile on their face. Oh, again. this is very good, Imran. Yeah. So that is made, sport from Imran Hussain, the actual councillor, deputy leader,
of Bradford, and he's helped us out quite a lot. So basically, yeah. Okay, all right. This is very good, Imran. Whatever you are doing, you know, this is very good charity works, and you know. लेकिन मैं फिर कहूँगी कि हमें जो है एक ब्रेक लेना होगा, और इंशाल्लाह ब्रेक के बाद फिर हम दोबारा से कंटिन्यू करेंगे. जी नाजरीन, इमरान जो है अपनी चैरिटी के बारे में भी बता रहे हैं. बहुत अच्छे मेकअप आर्टिस्ट हैं और ड्रेस डिज़ाइनर हैं. मेंस के जो हैं मेंस कलेक्शन है इनका अपना एक, और यूके में एक इनका चैरिटी के हवाले से हो, चाहे मेकअप आर्टिस्ट हों, उस हवाले से जो है एक इनका नाम है. तो फिर और क्या क्या टैलेंट हैं इमरान में, तो यही है कि फिर मैं इंशाल्लाह ब्रेक पे से आने के बाद जो है वो फिर हम इनसे बात करते हैं. और ब्रेक पे से आने के बाद जो है हमें जो है रिश्ते भी बताने हैं. तो ये है कि एक छोटा सा पहले हम ब्रेक ले लेते हैं.
جی ناظرین بریک سے واپس آ گئے ہیں اور بریک پہ جانے سے پہلے جو تھی میرے جو مہمان ہیں عمران ان سے میں بات کر رہی تھی اور عمران جو ہے اپنی چیریٹی کے بارے میں بتا رہے تھے اور بہت ساری چیزوں کے بارے میں بتا رہے تھے کہ اور کیا کیا ٹیلنٹ ہے ان میں. بات جو ہے کنٹینیو کرنے سے پہلے جو ہے میں کال لے لوں. ہیلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہیلو میں عائشہ بول رہی ہوں ہڈرسفیلڈ سے. جی. I just would like to say Imran is doing an extremely good job. MashaAllah, I've been following him all over events that's been taking place. Keep it up. The young Asian lad from Bradford that has بہت شکریہ. community proud and Pakistan proud, MashaAllah. I just want to say keep the good work up. You've got hundreds of followers all over the country. Thank you very much. Thank you. Right. No problem. All the community, Asian, English, everybody is following you. Just keep the good work up. We're with you all the way, 100%. MashaAllah. Thank you very much. بہت شکریہ آپ کا. بہت شکریہ عائشہ. بہت شکریہ. عمران کالز جو ہیں بہت زیادہ آ رہی ہیں لیکن یہ کہ کیونکہ شادی بیاہ کا پروگرام ہے اور آپ کی اگر اجازت ہو تو میں کچھ رشتے بتا دوں کیونکہ میرے جو ویورز ہیں میرے جو ویورز ہیں اور جو انتظار میں بیٹھے ہیں رشتوں کے وہ تھوڑا سا مائنڈ کر جائیں گے تو اگر آپ کی اجازت ہو تو میں کچھ رشتے جو ہیں وہ بتا دیتی ہوں. جی ناظرین کیونکہ شادی بیاہ کا پروگرام ہے اور رشتوں کے حوالے سے میں آپ کو بتا دوں کہ رشتے جو ہیں کیونکہ رمضان کا ٹائم ہے اور میں نے اپنے کلائنٹس کو کہا ہوا ہے کہ تھوڑا سا کوائٹ ٹائم ہے. میرے خیال میں آج جو ہے رشتے بتا نہیں پاؤں گی. کال ہے جی, کال میں لے لیتی ہوں. ہیلو. ہلو جی. جی کون بات کر رہے ہیں, کہاں سے؟ میرا نام ہے راجہ رفیق حسین. جی. میں پریسٹن سے بات کر رہا ہوں. میں اس کا انکل ہوں, بلکہ انکل بھی نہیں, بابا ہوں. بابا ہے ہمارا بابا. مبارک ہے, مبارک ہے. پوترے نہیں مبارک ہے. میں عمران کے ساتھ بات کر رہا تھا. جی جی آپ عمران کے ساتھ بات کریں. عمران ہیں جی. عمران السلام علیکم, ٹھیک ہو؟ وعلیکم السلام. عمران مبارک ہوا بیٹا, سے ٹی وی دیکھا بڑا دل خوش ہوا. ہاں تو سا کہ مبارک پوترے نہیں. اوکے. ہیلو. مبارک. ویری گڈ پتر, کیپ اٹ اپ, کیپ اٹ اپ. بہت شکریہ, بہت شکریہ. تو یہ ہے کہ عمران کی جو ہے کالیں آتی رہیں گی لیکن یہ کہ مجھے تھوڑا سا جو ہے بریک لینا پڑے گا اب رشتے بتانے کے لیے. تو رشتے اس طریقے سے ہیں کہ لڑکوں کے رشتے پہلے میں آپ کو بتا دوں. جو لڑکے جو ہیں وہ رجسٹر ہوئے تھے رمضان سے پہلے کی یہ بات ہے کیونکہ رمضان میں جو ہے تھوڑا سا کوائٹ ٹائم ہے. رمضان میں لوگ باغ شاید رشتوں میں تھوڑی سی اتنی زیادہ تک دو اور بھاگ دوڑ نہیں کر رہے ہیں. تو یہ ہے کہ آئی ڈی ہے ان کی 301 ان کی آئی ڈی ہے, 26 ایئر اولڈ ہیں, 6'1" ان کی ہائٹ ہے, برٹش ہیں, انجینئرنگ کری ہوئی ہے انہوں نے اور بلانگ کرتے ہیں راجپوت فیملی سے اور یہ ہوتے ہیں مینچسٹر میں. اور یہ دیکھ رہے ہیں کوئی ہیڈ اسکارف والی لڑکی اور ان کی آئی ڈی ہے 301. اس کے بعد ہمارے پاس 302 اس طریقے سے 32 ایئر اولڈ ہیں, ہائٹ جو ہے ان کی 5'8" ہے اور یہ بلانگ کرتے ہیں سید سنی فیملی سے. تو سید سنی فیملی سے یہ بلانگ کرتے ہیں اور ڈگری انہوں نے میڈیا میں کری ہے, میڈیا اینڈ بزنس میں کری ہے. تو لڑکی جو ہے برٹش انہیں چاہیے اور اگر بریڈ فورڈ کے پاس ہو لڑکی تو بہت اچھی بات ہے کیونکہ یہ بلانگ کرتے ہیں بریڈ فورڈ سے. اس کے بعد ہمارے پاس 303 اس طریقے سے کہ 24 ایئر اولڈ ہیں, 6'1" ان کی ہائٹ ہے اور یہ ہیں فارماسسٹ ہیں اور یہ بھی دیکھ رہے ہیں کوئی سنی سید لڑکی ہو, فارماسسٹ ہو تو بہت اچھی بات ہے. اور خود یہ فارماسسٹ ہیں, 24 ایئر اولڈ ہیں اور اسکاٹ لینڈ سے بلانگ کرتے ہیں. اس کے بعد ہمارے پاس 304 اس طریقے سے کہ 44 ایئر اولڈ ہیں, برٹش ہیں, ڈیورس ہیں اور ان کا اپنا بزنس ہے اور یہ بھی دیکھ رہے ہیں کوئی ڈیورس لڑکی ہو یا کسی کا ایک آدھ بچہ ہو تو یہ ان کو مائنڈ نہیں ہے. اس کے بعد ہمارے پاس 305 اس طریقے سے کہ 26 ایئر اولڈ ہیں, 5'10" ان کی ہائٹ ہے, ڈاکٹر ہیں اور یہ جاب کرتے ہیں ہاسپٹل میں, اسپیشلائز کر رہے ہیں آئی میں. اور ان کو کوئی ضروری نہیں کہ کوئی لڑکی ڈاکٹر ہی ہو, اگر کوئی ڈینٹسٹ ہو, فارماسسٹ ہو یا کوئی اچھے پروفیشنل سے بلانگ کرتی ریلیٹڈ ہو تو پھر وہ ان سے کانٹیکٹ کر سکتی ہے. اور ان کو وداؤٹ حجاب والی لڑکی چاہیے. ان کی آئی ڈی جو ہے وہ 305
5 है। तो ये लड़कों के रिश्ते थे जो मैंने बताए हैं, क्योंकि मैं अपने गेस्ट को जो है बोर नहीं करना चाहती हूँ अपने प्रोग्राम में लाके, लेकिन ज़ाहिर है शादी ब्याह का प्रोग्राम है और मुझे जो है रिश्ते बताने पड़ते हैं। एक प्रोग्राम का ये फॉर्मेट के तौर पे प्रोग्राम का फॉर्मेट है। तो आप किसी भी रिश्ते में अगर इंटरेस्टेड हों तो प्लीज़ आप जो हैं फेसबुक पे जो है मुझे मैसेज कर सकते हैं या ईमेल कर सकते हैं। फेसबुक का मेरा पेज है शादी ब्याह विद शहला काजी, तो उसके ऊपर जो है आप आईडी के तौर पे जिस आईडी में भी आप इंटरेस्टेड हों तो मुझे आप जो है वहाँ पे मैसेज कर सकते हैं। और अगर आप फेसबुक पे नहीं जाना चाहते हैं तो आप चाहते हैं कि कॉल करें तो हमारे कंट्रोल रूम में जो है आप अपना नंबर छोड़ सकते हैं। किसी भी आईडी में अगर आप इंटरेस्टेड हों तो कंट्रोल रूम में आप अपना नंबर छोड़ के जो है फिर उसके बाद जब प्रोग्राम ख़त्म होता है तो फिर मैं आपसे बात कर लूँगी। और अगर चाहते हैं कि जैसे हमारी लाइनें जो हैं हमारे गेस्ट की वजह से बिज़ी हैं, कुछ वैसे भी बिज़ी होती हैं हमारी लाइनें, अगर आप चाहते हैं कि ईमेल करें तो ईमेल प्लीज़ आप मेरा नोट कर लीजिए। ईमेल है मेरा sb_dm@live.com। तो किसी प्रोग्राम के बारे में अगर किसी किस्म की आपको फीडबैक देना है या हमारे गेस्ट के बारे में या किसी किस्म की भी फीडबैक देने तो उसके ऊपर आप जो है आप हमें ईमेल कर सकते हैं। और अगर रिश्तों के हवाले से किसी की प्रोफाइल भेजनी है तो तब भी आप उस मेरे ईमेल पे जो है अपनी प्रोफाइल भेज सकते हैं। और दोबारा से हम अपने गेस्ट की तरफ चलते हैं। इमरान जी सो आप जो थे, मैं क्योंकि मुझे बहुत सारी कॉल्स आती हैं और सारी की सारी कॉल्स जो हैं वो यही आती हैं कि आप जो मेकअप आर्टिस्ट, देयर आर सो मेनी मेकअप आर्टिस्ट जो जो लड़कियों के हवाले से, तो मेंस के हवाले से मुझे बताएं बिकॉज यू डन लॉट्स ऑफ सेलिब्रिटीज एंड हाउ मेनी सॉरी 23 माशाल्लाह। सो इज इट only Asians or? No, I've done basically John Mackey, the Queen's painter. Basically, he does painting, oil paintings, facial paintings, everything he does, and I did his as well. And not only him, it was David Harper. Oh, good. Now he's an Antique Roadshow. He's on ITV1. Oh yeah, and, yeah, that's quite. He's very famous. He bought a blazer and a suit off me, and then. Basically, them are the two that we've done, and then I don't know if you've heard of Paul Daniels. He's a magician and he does quite a lot of stuff. Yeah, I heard this. Yeah, name. he bought a suit. So basically, we've done quite a lot. People, that's the 3 multicultural people that we've done. So yeah. What about in Asians? Asian, well, we've Bradal Haq. Bradal Haq, very famous. Very famous. Bradal Haq, Rambo. Pakistani film star. Yeah. What's his name? Rambo, what's his real name? Something. I call him Rambo because he came as Rambo, and he's an amazing person. And you know, I can go on and on, but I think we're going to talk about more about the makeup and the, you know, the celebrities. तो आपसे किस तरीके से contact वो लोग करते हैं क्या? Basically, it's on Facebook and it's under IK Collections and Makeovers. That's how they find me, and then they send an email and. It's just a word around, and to be honest, it's going to be a year this week, and I've had over 10,500 likes. Right. That's a lot. That's a lot, really. Mashallah, mashallah. And they're from Pakistan all over. Now, going back to the charity, that's what we're here for. Yeah, exactly. I would just like to say thank you to my cousin, Raja Bashir from Oldham. You mentioned, you know, name something Shia. That's why I was a little bit confused about that. We want to check that. And he's done a lot in Pakistan with the community, the mosques. He rebuilt the actual new class he built. Oh, good. With all my cousins from Oldham, Raja Bashir. I just want to say thank you very much, and he's the main man. Oh, he's the main man. Yes. Right, okay. So basically, we're doing at the moment concentrating on the local projects at the moment in Bradford with the BRI hospital, and then we're going to go to the youth centre where there's drug addicts. What you are going to do? We're going to go there. BRI, what we're doing is we're going to go to the children's ward and give them presents, and the nurses. Is it only for Eid or Christmas time? No, I give it Christmas time, Diwali, Eid, any celebrations. We go down and give presents to them. And there's 2 wards, so there's about 70 kids, and then plus the nurses. So put a smile on their face, and then it's good. Also going to the care home, old people's care home, and gonna do basically makeup and hair on them, and
give them gifts and spend a bit of Right. time with them. So that's what we're going to do. Right. Are you doing anything for children because Eid is coming For you know for Pakistan or for Pakistan, yes, you know? we are doing quite a lot. Yeah. Basically, it's all, and if you go on Khan People's Charity on Facebook, that's Khan People's Charity on Facebook, you can have a look what we're doing. But at the moment, I'm concentrating on the local projects. Right. We are doing few projects in Pakistan, but we're just trying to sort everything out this week, what we're going Right. to concentrate on. So yeah. So are you doing anything, you know, in here in UK? In the UK, we will be for- doing a few shows. Right. And Chandrat On as Chandrat, normally. And okay. we are with Nivea and L'Oreal. I used to do modeling for L'Oreal and Nivea. Oh. And basically, they've donated quite a lot of products, which they know me quite well. And we're going to raffle them off or sell them, make them as hampers and generate Right. business like that. So yeah. So how long you been running this charity? Since 2006. 2000 late 2000. when there was the earthquake. 2008. No, 2006. But originally it was 2006. Then 2008, we started to name it properly, Khan People's Charity. So yeah. Right. So that one is your name. Yeah. Well, we was gonna name it other name, but we decided, me and John Mackey, the famous Yeah. artist, You and, told. Yeah. the Queen's painter. Yeah. We sat down. We decided to name it that name. And then I've also Giles Castleton from GC Motors. He's done quite a lot, helped me out, supported me with all my projects. Right. To be honest, it's all multicultural people are getting together True. and supporting. So yeah. Yeah. Tell me about your future plan, Imran. The because future plan. about your charity. The about charity. your, What I yeah. would like to do is sort out the local hospital that I've seen in Pakistan. It's a very small hospital where my grandma got ill and I had to go see her, and I think that needs revamping. And also, what I would urge is the government to come down, have a look at the roads. In the Gujarahan road, it's really, really bad. You gaddi bhi nahi chalana nahi hota. All my friends come on the road and they have to wait, and it's disgusting. It's really bad. Then not only just that, I want the actual government to give a grant to rebuild them 2 classes for the Classes and- education. yeah. Education is so important in Pakistan. If you don't give them education, do you blame them begging for money? No, No, don't I blame 'em. understand. You know. So that's why Yeah. if they give them education, they can go to next level and start going to university and college. Right. So yeah. that's your plan. You know. Yeah. And are you doing any charity show? You know, for your charity to we are supporting going to be your- doing few, Yeah. but we haven't planned it. But it's going to be after Ramzan? Yes. Yeah. But we are doing like at the bazaars fundraising. So yeah. We are Bazaar fundraising. fundraising. What is that? Just basically doing either a fashion show or Right. just doing few Right. shows, Okay. but all to do with Islam. Yeah. Yeah. So yeah. Again, Imran, अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं कुछ लड़कियों के रिश्ते बता दूं. Of course. If Oh, you well, don't I'm mind, interested. yeah, if you don't mind, please, because शादी ब्याह का प्रोग्राम है और फिर लड़कियों के रिश्ते जो हैं ना बताए जाएं, ये तो हो नहीं सकता है. लड़कियां जो है नाराज़ हो जाएंगी. तो लड़कियों के रिश्ते इस तरीके से आए हैं कि 201 इनकी आईडी है और 201 आईडी इस तरीके से 26 ईयर ओल्ड हैं, हाइट जो है इनकी 5'4" है, ब्रिटिश हैं, डिग्री इन्होंने जो है ऑडियोलॉजी में करी है और ये हेड स्कार्फ लेती हैं. हेड स्कार्फ लेती हैं और देख रही हैं कि कोई ब्रिटिश लड़का हो, ब्रिटिश लड़का देख रही हैं और अगर मैनचेस्टर के पास हो तो बहुत अच्छी बात है. इसके बाद है हमारे पास 202 इस तरीके से कि 28 ईयर ओल्ड हैं, डिग्री इन्होंने की आईटी में डिग्री करी है, सेकेंडरी स्कूल टीचर हैं और ये बिलोंग करती हैं जट फैमिली से, चौधरी जट फैमिली से जो है बिलोंग करती हैं. 28 ईयर ओल्ड हैं, आईटी में डिग्री करी है, सेकेंडरी स्कूल की जो है ये टीचर हैं. इसके बाद हमारे पास 203 इस तरीके से एक 34 ईयर ओल्ड हैं, डिवोर्स्ड हैं और इनकी हाइट जो है 5'6" है और ये होती हैं मैनचेस्टर में. और ये भी देख रही हैं कोई ब्रिटिश लड़का हो, क्योंकि बहुत सारी हमें कॉलें आती हैं जो कि स्टूडेंट होते हैं या फिर वर्क परमिट पे आए हुए होते हैं, तो ख़ास तौर पे लड़कियां जो हैं बता देती हैं कि जिनको ब्रिटिश लड़के चाहिए होते हैं या ब्रिटिश लड़के नहीं चाहिए होते हैं, तो वो ज़्यादातर जो हैं हमें बता देती हैं और कहती हैं कि मेंशन ज़रूर कर दें. तो इस वजह से हम मेंशन ज़रूर करते हैं. इसके बाद है हमारे पास 204 इस तरीके से कि 32 ईयर ओल्ड हैं,
5'2" इनकी हाइट है और ये उर्दू स्पीकिंग हैं और ये बिलोंग करती हैं इंडियन फैमिली से, लेकिन इंडियन मुस्लिम फैमिली से ये बिलोंग करती हैं। लंदन में ये होती हैं और इन्होंने डिग्री करी है सोशल एंड हाउसिंग में जो है इन्होंने डिग्री करी है और ये जॉब भी जो है हाउसिंग वेलफेयर के से जो रिलेटेड जो डिपार्टमेंट है उसके अंदर ये जॉब कर रही हैं और ये होती हैं लंदन में और ये प्रेफर कर रही हैं कि लंदन में अगर कोई लड़का हो तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि मैनचेस्टर के कुछ रिश्ते हमने इनको बताए थे तो मैनचेस्टर में ये इंटरेस्टेड नहीं हैं। तो ये है कि इनकी आईडी है 204 और अगर कोई इंडियन लड़का हो, इंडियन मुस्लिम लड़का हो तो वो इनसे कांटेक्ट कर सकता है। तो ये रिश्ते जो थे मैंने आपको बताया 201 से लेकर 204 तक रिश्तों तो बहुत ज़्यादा हैं जिन्होंने रिक्वेस्ट भी करी है कि उनकी प्रोफाइल जो है रीड की जाए, लेकिन फिर वही बात है कि प्रोग्राम में जो है टाइम कम होता है और फिर ये कि हमें अपने गेस्ट को भी टाइम देना पड़ता है। तो जिस रिश्ते में भी फिर से मैं कहूँगी जिस रिश्ते में भी आप इंटरेस्टेड हो प्लीज़ हमें जो है कंट्रोल रूम में जो है आप अपना नंबर छोड़ दीजिए, तो हम प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद जो है हम आपसे कांटेक्ट कर लेंगे। और अगर ये है कि फ़ोन करना मतलब नहीं चाहते हैं तो फिर ये है कि आप हमें ईमेल कर सकते हैं। ईमेल जो है हमारा है वो है sb_dm@live.com ये ईमेल है। और अगर ईमेल भी नहीं करना चाहते हैं और देखना चाहते हैं कि किस तरह के रिश्ते हैं और बच्चों के मुतालिक ज़ाहिर है सारे पेरेंट्स जो होते हैं कंसर्न होते हैं कि किस तरीके के रिश्ते हैं और किस तरीके से प्रोफाइल भेजी जाए, तो फिर आप जो हैं फेसबुक पे आप जा सकते हैं और फेसबुक जो है वो है शादी बिया, जो प्रोग्राम का नाम है शादी बिया विद शहला काजी। तो उसके ऊपर आप जाके जो है रिश्ते आप देख सकते हैं जितने भी जो रिश्ते हैं। तो ये तमाम प्रोग्राम का फॉर्मेट था। और गेस्ट के हवाले से मैं अपने बता दूं, अगर आपको किसी किस्म के कोई क्वेश्चन करना हो हमारे गेस्ट से या इनके बारे में भी कुछ जानना हो तो ये है कि इमरान जो हैं कंट्रोल रूम में, तो आप उनसे जो है वो बात कर सकते हैं। अगर किसी किस्म के जो है क्वेश्चन किसी किस्म का पूछना है या इनकी चैरिटी के बारे में पूछना है या क्योंकि ये मेकअप आर्टिस्ट हैं तो ये कि उसके बारे में किसी को पूछना हो या जो आजकल जो इसके बाद रमज़ान के बाद बहुत सारी शादियां हो रही हैं, तो अगर किसी किस्म का भी आपको मेकअप करवाना हो, ख़ासतौर पर लड़कों का जो है ग्रूम का मेकअप जो है, तो वो जो है उसके लिए इमरान का जो है नंबर आप ले सकते हैं कंट्रोल रूम से। इमरान जो है बात कर लेंगे आपसे। और अगर किसी किस्म के भी आउटफिट, मेंस आउटफिट में अगर आप इंटरेस्टेड हों तो उसके लिए भी आप जो है इमरान से कांटेक्ट कर सकते हैं। बहुत अच्छे आउटफिट जो हैं बनाते हैं और बहुत अच्छे इनका एक ब्रांड है, इनका एक नाम है। तो टेल मी, मेरे ख्याल में हम खुद ही पूछ लेते हैं कुछ इनके आउटफिट के बारे में। इमरान, टेल मी अबाउट योर आउटफिट्स। I know you explained before that, but it's only for men. It's blazers and suits and dinnerwear. We've got like celebrity outfits with all the royal buttons going across. Oh, that's good. Very similar to the Lord Mayor, but it's a lot classy and it's a lot better. They're all on IK Collections and Makeover Facebook page, and the blazers and waistcoats and sherwani. What is your Facebook page? Then people can the Facebook page is IK Collections and Makeovers. Right, okay. So agar koi interested if anyone's interested, you can email us, or there's a number on there to contact. Yeah. So yeah, and if they're getting married in the next 2-3 months, and if they want the groom makeup or going through with all our schedule, what we've got and everything available, they can go through IK Collections and Makeover. तो आप जो हैं, I mean, tell me about your whole package, because जो मेरे पिछले प्रोग्रामों में जो लोग आए थे वो एक पूरा पैकेज देते थे. Is that include if I want there's bridal makeup as well, so and groom as well? We can do everything. We can do bridal, we can do groom, we can do like a part, all sorts of makeup. Have you got any branch? We can go. We're all over. There's a good team with us, so right. They all obviously work under me. So if you want, bridal, groom, doing, but I just do mainly the men's side. And right. I can do the women's, but I'll leave that with the women's side. But yeah. Yeah. इमरान, प्रोग्राम का जो है टाइम थोड़ा सा शॉर्ट रह गया, ख़त्म ही होने वाला है तकरीबन. कोई लास्ट मैसेज कुछ आप हमारे व्यूअर्स को देंगे प्लीज़? I just want to say thank you very much to everyone that's watched us, and
I just want, if the government of Pakistan is watching in Gujran Sandal, the Sandal, Sandal, the actual road is really bad, and also the school to get a grant. So اوکے تھینک یو عمران. جی آج جو تھے ہمارے گیسٹ تھے عمران جو کہ چیریٹی ورکر ہیں. میرے کو بہت ساری جو جتنے بھی ٹیلنٹ تھے وہ میں نے آپ کو بتا دیے ہیں ان کے. اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ شادی بیاہ سے ریلیٹڈ کوئی آپ کا بزنس ہے اور پروموٹ کرنا چاہتے ہیں, ہمارے پروگرام میں آنا چاہتے ہیں, تو آپ ہم کو کال کر سکتے ہیں. اور یہ ہے کہ ای میل میں دوبارہ سے بتا دوں, اپنا ای میل ہے میرا sb_dm@live.com. رشتوں کے حوالے سے اگر آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو ای میل کر سکتے ہیں. اور یہ ہے کہ دیکھنا چاہتے ہیں کس طرح کے رشتے ہیں تو آپ میری فیس بک کے اوپر جا سکتے ہیں. فیس بک کا پیج ہے شادی بیاہ وتھ شہلا قاضی. تو کسی قسم کا پروگرام کے بارے میں فیڈ بیک دینا ہے تو پلیز ہمیں ای میل ضرور کر دیں. پروگرام کے لیے آج کے لیے اتنا ہی تھا, اور نیکسٹ پروگرام میں پھر انشاءاللہ نیکسٹ گیسٹ کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے شہلا قاضی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.